Friends, good health, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत is the topic of the time now. Everybody is talking about good health. Too much of information is coming. Diet, nutrition, exercises, immunity, therapies, so on and so forth. कोई बोल रहा है भाई हर 2 घंटे बाद खाओ, कोई बोल रहा है 12 घंटे में खाओ, कोई बोल रहा है न्यूट्रिशन के लिए ये खाओ वरना ये मत खाओ. People are talking about different exercises, this exercise, that exercise, cardios and whatnot. So many therapies. Everybody is talking about immunity. Everybody is in search of that good health, which appears to be becoming even and more precious day by day. But still the challenges are not over, what we can see. People are still thoroughly confused. लोगों को पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली ऐसा क्या करें, क्या सीक्रेट है, क्या फंडा है कि भाई जिससे अपनी सेहत अच्छी बनी रहे. We will be fit and fine and no virus will attack us, no virus will do anything bad to us. I remember one of my चाचा जी देहात में जब रहते थे, गांव में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे. There are many examples I can share with you today which can probably give us some little insight as to what is that missing link between us and the good health. जब से मैंने उन्हें देखा बचपन से खेती बाड़ी करते थे, बहुत ही सिंपल सादा सरल जीवन बिताया उन्होंने. He lived well into his 90s and I did not see him getting a single hospitalization at all in his 90 years. No surgeries, hardly any medications. तो क्या थी उनकी जिंदगी? That can be an example for all of us. बिल्कुल सीधा खाते थे, जो घर का खाना हो, दाल चावल हो, सब्जी हो. खाने के बाद लोग कहते हैं कि भाई 2 घंटे तक सोना मत. ये खाने के बाद 15 मिनट में सोते थे. हमने देखा है. नो एनी फॉर्मल काइंड ऑफ एक्सरसाइज. खेती बाड़ी के बहाने जो चलना होता था. हमेशा मैं सोचता हूं कि भाई इन व्यक्तियों में ऐसी क्या खूबी थी जो इनको अच्छी सेहत मिली, आखिर तक लंबी जिंदगी भी मिली ईश्वर की कृपा से. एक चीज हमने देखी उनमें कि वो हमेशा खुश रहा करते थे, हमेशा हंसते थे, हमेशा. देखिए ऐसा नहीं था कि he didn't have any challenges at all. There were issues of finances, there were children, their education and careers and futures and whatnot. Everything was there. But probably there is a saying in Sanskrit which says that Chita dahate mrtaha, chinta dahate jivita. Probably he knew I would say the crux of this particular saying. कि हमारे सामने एक प्रश्न तो हमेशा रहेंगे. We will always have challenges of our life. But all said and done, if we do our best, if we give it a serious try to solve every problem, we cannot solve every problem. लेकिन हम खुश रहे कि मैंने मेरी कोशिश की है और बाकी जो है हम अपनी डेस्टिनी पे छोड़े. लेकिन मेरे ख्याल से ये खुश रहना, आई थिंक लेट्स नॉट वरी. आज this could be one of the fundas of our good health. I wish we could follow that.